So good morning to all of you and welcome back again in the semester 6 paper 1, that is a plant physiology and biotechnology. So dear students, as we know that in the previous lecture we have started the semester 6, the part of semester 6. In this semester 6 there are two papers, that is a paper 1 and a paper 2. So the part of paper 1, it consists of total 4 units, and out of these 4 units, unit number 3 and unit number 4 is allotted to me. The part of unit number 3, it consists of the part of biotechnology, which involves the plant tissue culture, definition, then some of the important terms like the totipotency, explant, aseptic culture, in vitro micropropagation, methods of sterilization, then culture media, hormone requirement and the application of tissue culture. Similarly, the callus and organ culture and its application, hybrid production and its application. So these are the points which are involved in the semester 6, paper 1, unit 3. So let's just start with this introductory point, that is a part of biotechnology. So first of all, we started with the definition of biotechnology. What is meant by the biotechnology? That the biotechnology, it is applied branch of science and it comes into existence by the fusion of biological science and the technology. So the biotechnology, it is one of the important branch of science which involves the modern techniques to develop the desired characteristics in the particular organism. The term biotechnology came into existence in mid 1970s. It concerns with the use of biological agents or their components for generating the useful products or services beneficial to the society. So finally, we can say that the biotechnology, it is a branch of biology in which the use of live organisms, enzymes, and various processes to produce a product, and this product will be provide services to the human welfare. मतलब बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की कि जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, कुछ एंजाइम्स का यूज किया जाता है, कुछ प्रोसेसेस यूज की जाती है। इन सभी को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और ये प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग के अच्छे काम के लिए यूज किया जाता है। सो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी, इसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। It covers a vast area and is associated with the different allied branches of science. मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कवर करती है, क्या कवर करती है? वास्ट एरिया एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट अलाइड ब्रांचेस ऑफ साइंस। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस में, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। The biological agents used in the biotechnology range from the biomolecules, that is the cells, tissue, and organ, and even a complete multicellular organism. बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल एजेंट्स कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, इट मे बी अ बायोमोलिक्यूल, दैट इज इट मे बी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एटसेट्रा. It may be a cell, it may be a tissue, or it may be an organ, or even complete multicellular organism. The products of biotechnological processes are becoming increasingly important in terms of human health. यानी अगर आजकल हम देखा जाए तो मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है और जो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, वो प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छी तरह से ह्यूमन बीइंग को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। At present, the glimpses of immense capabilities of biotechnology appears to be almost limitless. मतलब अगर अभी हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अगर एप्लीकेशंस देखते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज अगर देखते हैं, सो दीज आर ऑलमोस्ट लिमिटलेस। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं कि दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। Biotechnology has derived data from the various branches of science and extended its application towards the different issues of the human concern. So this is all about the part of introduction related to the biotechnology.
Now let's just talk about the definition of biotechnology. Different organizations all over the world have defined biotechnology in the different ways. मतलब बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे अलग अलग पैटर्न से एक्सप्लेन किया है. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has defined biotechnology as the applications of scientific and engineering principles to the processing of materials by biological agents to provide goods and services. So this is the definition given by the OECD. Some of the standard and frequently quoted definitions of biotechnology are given below. मतलब इसके अलावा भी कुछ ऑथेंटिक डेफिनेशंस दी है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड. देखते हैं. US National Science Foundation gives information related to the definition of biotechnology that according to this, biotechnology is the controlled use of biological agents such as a microorganism or the cellular components for the beneficial use. The European Federation of Biotechnology, it states about the biotechnology that the integrated use of biochemistry, microbiology, and engineering sciences in order to achieve the technological applications of the capabilities of microorganism or cellular components for the beneficial use. According to the J.D. Bullock, biotechnology is controlled and deliberate applications of the simple biological agents, that is a living or dead, cells or cell components in a technically useful operations either of productive manufacture or as a service operation. Means finally we can say that the biotechnology, it is a branch of biology which deals with the use of live organisms. Biotechnology ऐसी एक ब्रांच है बायोलॉजी की या फिर साइंस की कि जिसमें हम लोग लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, कुछ एंजाइम्स यूज करके और कुछ प्रोसेसेस फॉलो करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये नया प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग के अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं. तो इस ब्रांच को हम लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी. नाउ द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस देखेंगे. It is truly a multidisciplinary science and has manifold uses in all the domains of the human welfare, ranging from the food processing, environment protection to the human health. Some of the important applications of biotechnology are as follows. बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारे एप्लीकेशन है ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है. ठीक है. So all these are the different applications of the biotechnology related to the human beings. Now some of the applications, कुछ applications के बारे में देखते हैं. Just a minute. So that the applications of biotechnology, having the various applications as it provides the services to the human welfare. So let's just talk about these uses of biotechnology. The first one, that is a generation of new and novel pharmaceutical biomolecules. Means with the help of biotechnology, we can produce the new biomolecules. हम लोग नए biomolecules में formulas बना सकते हैं related to the different chemical compound, pharmaceutical drugs, production of various enzymes, hormones and vitamins. हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अलग अलग एंजाइम्स बना सकते हैं नए वाले.
हॉर्मोन्स बना सकते हैं, विटामिन बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल or modified biomolecules such as the proteins, organic acids, biosolvents, polysaccharides, etc., employing to the microorganisms. Development of new sources of renewable energy we can produce. Production of antibiotics, vaccine, etc. So the need of these compounds are very essential nowadays. ठीक है, antibiotics और vaccine की बहुत ही जरूरत पड़ रही है हमें अभी due to this pandemic situation. So the production of antibiotics, vaccine, etc. It can be produced with the help of various applications of biotechnology or the processes of biotechnology. Improvement of various disease resistant, stress resistant, insect resistance and production of high yielding crop varieties. हम लोग यहाँ पे डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं पर्टिकुलर क्रॉप की, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज। मतलब जो क्रॉप प्लांट होते हैं उनमें हम लोग डिसीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं, उस प्लांट में कभी डिसीज नहीं होंगी। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल वाटर स्ट्रेस, देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा, तो उसका स्ट्रेस को कोई इफेक्ट नहीं हो सकेंगे उस क्रॉप प्लांट पे। Insect resistance and production of high yielding crop varieties can be produced by using the biotechnology. Application in the animal husbandry and in case of the animal health, it also be useful for the biotechnological applications. Diagnosis and curing of various diseases of the human beings and other domestic animals. हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, उस पे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं वेरियस डिसीजेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द डोमेस्टिक एनिमल्स। यूज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखिए कहाँ कहाँ पे भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, फ्लोरिकल्चर में हो सकता है। यूज इन द फोरेंसिक साइंसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्राइम्स एंड सॉल्विंग द पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। फोरेंसिक साइंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, न्याय सहायक विभाग जो होता है, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ क्लूज वहाँ पे या फिर कुछ ये जो मिलते एविडेंसेस वगैरह उनको चेक करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग टेक्निक्स वहाँ पे यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल पीसीआर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जीन क्लोनिंग है, एक्सेट्रा। So these are the points which are associated with the applications of the biotechnology. Finally, we will going to start the main topic, that is a plant tissue culture. In short, it is called the PTC. उसे PTC कहा जाता है, PTC that is the plant tissue culture. चलिए देखते हैं plant tissue culture क्या होता है। तो the term cell culture is commonly used for in vitro culture of the cells, tissues and the organs. So the term cell culture करके एक टर्म यूज की जाती है, commonly used for the in vitro culture. In vitro means artificially and in vivo means naturally. अगर हमें आर्टिफिशियली कोई नया प्लांट बनाना है सिंगल सेल से, टिश्यू से या फिर ऑर्गन से, तो हमें ये सेल कल्चर टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। But the term tissue culture is applied to in vitro cultivation of the plant cells in an unorganized mass, that is the Callus culture. लेकिन अगर हमें टिश्यू कल्चर प्रोसेस यूज करनी है, ठीक है, अप्लाई टू द इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट सेल्स इन अनऑर्गेनाइज्ड मास व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैलस कल्चर। अगर हमें प्लांट्स के केस में अगर हमें इन विट्रो कल्चर अगर करना है या फिर आर्टिफिशियली हमें प्लांट ग्रो करवाना है, तो हमें वहां पे एक अनऑर्गेनाइज्ड मास प्रोड्यूस करना पड़ेगा व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैलस कल्चर। The callus represent an unorganized mass of cell capable of repeated cell division and growth in vitro. Basically, callus अगर देखा जाए, it is a part of unorganized mass of cells. ठीक है, ये unorganized mass of cells होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ फोटोग्राफिक इमेजेस दिखाई थी वहां पे। So basically, the callus it is the part of unorganized mass of cells or the tissues. मतलब अगर हमें एक सिंगल टिश्यू मिल जाता है किसी प्लांट का, तो उस टिश्यू को हम लोग आर्टिफिशियली ग्रो करवाएंगे और ग्रो करने के बाद एक पार्ट बन जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कैलस। और ये जो कैलस होता है, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल और द टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज कैलस। The term cell culture is used for in vitro suspension culture
that is a culture of single cell or the small group of cells in a liquid nutrient medium. तो ये तो इंट्रोडक्शन है टिश्यू कल्चर से रिलेटेड. The technique of plant tissue culture occupies a key role in the second grain revolution by improving the crop plants in terms of yields and quality. Means अभी आप इन्होंने बताया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड, जिसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं. ठीक है. सो बिफोर 1961 हमारे इंडिया में 1961 के पहले and just after the independence के बाद that situation was very critical related to getting the food material. ठीक है. यानी सभी लोगों को खाना नहीं मिल पाता था, एक समय का ही खाना नसीब हो पाता था या फिर मिल पाता था प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे उतना प्रोडक्शन ही नहीं होता था. खेती में प्रोडक्शन नहीं होता था तो फिर फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था पब्लिक को. ठीक है. So to solve this problem, that the great scientist, that is Swaminathan, Indian scientist, they introduced the green revolution by using this plant tissue culture technique. प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज करके इन्होंने कुछ ऐसी हाइब्रिड वेराइटी इंट्रोड्यूस कर दी थी दैट हाइब्रिड वेराइटी इट कैन गिव द मैक्सिमम प्रोडक्शन. और वो जो हाइब्रिड वेराइटी प्रोड्यूस की थी, these hybrid variety were produced with the help of this plant tissue culture technique. That's why the technique of plant tissue culture occupies a key role or the important role in the second green revolution by improving the crop plants in terms of the yield and the quality. मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज करके हाइब्रिड वेराइटी ऐसी प्रोड्यूस की थी कि वो वेराइटी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी दे सकती थी और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी बन गई थी. ठीक है. दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन एम्प्लॉयड टू द वाइड रेंज ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड ट्री स्पीसीज. हम लोग ये जो टेक्निक है ये हम लोग किसी भी प्लांट के बारे में या फिर किसी भी क्रॉप प्लांट के बारे में किसी भी स्पीसीज के बारे में यूज कर सकते हैं फॉर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. Basically, the history of plant tissue culture begins with the concept of cell theory, which established the cell as a functional unit. तो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं या फिर सेल थियरी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. और सेल थियरी में हमें पता है कि दैट वहाँ पे कहा गया है सेल इट इज अ फंक्शनल और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. So it means we can produce the complete organism from the single cell also. हम लोग एक single cell से एक complete organism बना सकते हैं by using this plant tissue culture technique. This implies that the cells are autonomous. The concept was tested experimentally by the scientist Haberland in 1902, who convinced the idea of culturing the plant tissue culture or the plant cells. फिर 1902 में हैबरलैंड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था कि दैट इफ इट इज पॉसिबल और नॉट, मींस सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल सेटअप या फिर एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हैबरलैंड. The concept of totipotency, that is the ability of plant cell to perform all the functions of development, are also postulated by the Haberland. Haberland introduced one of the important term related to the plant tissue culture, that is a totipotency. Haberland नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस समय उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही थी प्लांट टिश्यू कल्चर के केस में, एंड दैट टर्म इज द नथिंग बट टोटिपोटेंसी. Thereafter, the attempts concerning the nutritional requirement of the cells to make them divide and sustain growth were made. Now, the basic aspects of the plant tissue culturing. अभी हम लोग basic aspects के बारे में पढ़ेंगे plant tissue culture से related. फाइनली ये पूरे इंट्रोडक्शन से प्लांट टिश्यू कल्चर के इंट्रोडक्शन से ये पता चल जाता है कि एक डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ culturing and growing isolated protoplast, cell, tissue or organ on a nutrient medium under the aseptic condition to produce a complete plant is called as a plant tissue culture. अगर हम लोग किसी प्रोटोप्लास्ट को, किसी प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को, मतलब इनसाइड द सेल के अंदर जो मटेरियल है उसे प्रोटोप्लास्ट, द प्रोटोप्लास्ट, सेल, टिश्यू और ऑर्गन, अगर किसी सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को हम लोग
न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम जैसे कि रफली मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो नेचुरली सॉइल होती है तो वैसा ही एक मीडियम बनाया जाता है, उसे न्यूट्रिएंट मीडियम कहेंगे हम लोग। ऐसे अगर न्यूट्रिएंट मीडियम पे आर्टिफिशियली किसी सेल को रखते हैं एसेप्टिक कंडीशन में फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, तो वो सेल कंप्लीट प्लांट में या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, फिर प्रोड्यूस कर सकती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। To explain the process of plant tissue culture, the scientist Haberland introduced one of the important term which is called as a totipotency. तो totipotency के बारे में भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। What is meant by this cellular totipotency? Basically, cellular totipotency is the ability of cell to divide and differentiate. ठीक है, टोटिपोटेंसी मतलब होती है एबिलिटी ऑफ सेल। किसी सेल में कितनी एबिलिटी है डिवाइड होने की और डिफरेंशिएट होने की। डिवाइड मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे, और डिफरेंशिएट मतलब बहुत सारी सेल बनने के बाद ग्रुप ऑफ सेल से अलग अलग ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम बनने की उसमें कितनी कैपेसिटी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। So the ability of cell to divide and differentiate is called as the cellular totipotency. So हम लोग cellular totipotency कहेंगे. Now let's just talk about these basic aspects of the plant tissue culture. Plant tissue culture के basic aspect देख लेते हैं. To understand the technique of tissue culture, one should embark upon the certain aspects of the tissue culturing which are essential to ensure the successful results. These aspects are briefly mentioned below. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चरिंग, यानी टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक को समझने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट्स या फिर कुछ टर्म्स हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, so to understand the aspects of plant tissue culture we should know some of the important terms and some of the important aspects related to the plant tissue culture. So let's just talk about the first aspect or the first term, that is explant. Now what is this explant? Explant क्या होता है? Any excised plant part which is used in the tissue culture is called as a explant. मतलब टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट का कोई भी जो पार्ट यूज किया जाता है, इट मे बी अ रूट, इट मे बी अ स्टेम, इट मे बी अ लीफ, इट मे बी अ सिंगल सेल टिश्यू एटसेट्रा। तो टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट का जो कोई भी पार्ट यूज किया जाता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट, उसे हम लोग एक्सप्लांट कहेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज दिस एक्सप्लांट। The part of the plant which is used for the tissue culture technique is called as an explant. उसे हम लोग explant कहेंगे। Basically, it is a source material used to initiate the cultures. मतलब ये सोर्स मटेरियल होता है, यानी सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो यही से स्टार्ट होती है, एक्सप्लांट से ही स्टार्ट होती है, कि जो हमें फिर कल्चर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हेल्प करती है। द एक्सप्लांट यूज्ड मे बी, एक्सप्लांट जो होता है वो कौन सा हो सकता है? एक्सप्लांट में बी लीफ, स्टेम पीसेस, एक्सिलरी बर्ड्स, रूट्स एंड शूट टिप्स, एंथर, ओवरी, एंडोस्पर्म एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दे चुके हैं ये लोग कि एक्सप्लांट मतलब हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। इट मे बी अ लीफ, स्टेम, एक्सिलरी बर्ड्स, रूट्स, शूट टिप्स, एंथर, ओवरी, एंडोस्पर्म एटसेट्रा। ये सभी चीजें हम लोग एज ए एक्सप्लांट करके यूज कर सकते हैं। During selection of explants, it is necessary that the explant should be explant to be used should be young and healthy. यानी जो कोई भी एक्सप्लांट हम लोग यूज करते हैं तो ये वो एक्सप्लांट जो है, दैट एक्सप्लांट the explant during the selection of explant it is necessary that the explant should be young and healthy. ठीक है, जब भी एक्सप्लांट यूज किया जाता है या फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, सो इट शुड बी यंग एंड हेल्दी। Again, the selection also depends upon the objectives of the study to initiate the culture. मतलब हमें किस टाइप का प्लांट प्रोड्यूस करना है या फिर हमें कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करना है प्लांट का, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा एक्सप्लांट लेना चाहिए। द सिलेक्टेड एक्सप्लांट शुड बी प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड, यानी जो हम लोग एक्सप्लांट यूज करने वाले हैं वो एक्सप्लांट प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। तो व्हाट इज स्टेरलाइज्ड condition? Sterilized by using the suitable sterilization method.
Various sterilization methods are available and they would be described in ensuring the segment of the same chapter. Now, what is this sterilize or the sterilization? The explant which is to be utilized in the process of plant tissue culture, it should be properly sterilized. Sterilization means the process of free from contamination or the removal of contamination. कंटेमिनेशन रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है किसी भी मटेरियल से, अगर हम लोग कंटेमिनेशन रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन. ठीक है, उसे हम लोग स्टरलाइजेशन कहते हैं. जैसे कि सिंपली यू कैन नाउ इन द डेली लाइफ, अभी हम लोग डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज दिस सैनिटाइजर्स. ठीक है, हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं. दिस सैनिटाइजर इट इज वन ऑफ द टेक्निक टू स्टरलाइज अवर हैंड्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और अलग चीजों को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, और वो जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम लोग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन. Basically, the sterilization it is a process of removal of contamination or the removal of infection from the substratum. तो जो भी हम लोग यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी एक्सप्लांट यूज किया जाएगा, एनी टाइप ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है, जो भी एक्सप्लांट यूज किया जाएगा, दैट एक्सप्लांट शुड बी स्टेरलाइज प्रॉपरली. ठीक है, वो एक्सप्लांट स्टेरलाइज करना जो भी एक्सप्लांट हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट एक्सप्लांट शुड बी स्टेरलाइज प्रॉपरली. ठीक है, उसे स्टेरलाइज करना जरूरी है, because without sterilization you cannot move ahead inch of ahead in case of the process of plant tissue culture. थोड़ा सा भी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं without sterilization process. So sterilization process it is one of the backbone process of this plant tissue culture. Now let's just talk about the second aspect or the second important term related to the plant tissue culture, that is a callus. Second term के बारे में देखते हैं, callus के बारे में. Cells from any plant species can be cultured aseptically or in the nutrient medium. मतलब एक्सप्लांट सिलेक्ट करने के बाद इस एक्सप्लांट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखेंगे या फिर कल्चर मीडियम पे रखेंगे. ठीक है, और कल्चर मीडियम पे रखने के बाद वो सेल या फिर वो टिश्यू ग्रो होना शुरू कर देंगे. ठीक है, और ग्रो होने के बाद एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएगा. That structure is called as a callus. मतलब callus it is obtained from the explant. ठीक है, after the growth of explant we will get the callus. Now technically callus it is an unorganized mass of cells. Tissues and the cells cultured on a agar gel medium form an unorganized mass of cell which is called as a callus. मतलब एक unorganized mass of cell या फिर unorganized mass of structure बन जाएगा after the growth of explant. This unorganized mass of cell is called as a callus. उसे हम लोग callus कहेंगे. Within 2 to 4 weeks, depending upon the plant species, the mass of unorganized cell is produced, which is called as a callus. Juvenile tissues are most likely to produce the callus. मतलब जो vegetative tissues रहेंगे, ठीक है, या young tissues जो रहेंगे, are most likely to produce a callus. Under the influence of plant growth hormones, the cells of the explants may be induced to divide and form a loose mass of cells which are highly unorganized and is called as a callus. Highly unorganized mass of cells which is called as a callus. तो ये callus क्या होता है, और उसके बाद में और कौन सी टर्म्स यहाँ पे आती है related to the plant tissue culture technique.